हाय गाइस, मैं कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी पे व्हील अलाइनमेंट कर रहा था और मैंने नोटिस किया कि जो मेरा स्टीयरिंग रैक है उसके दोनों साइड्स पे एक रबर का कवर सा होता है, डस्ट बूट। वो जो लेफ़्ट साइड का है वो फटा हुआ था। मैंने सोचा इसको रिप्लेस कर लूँ इससे पहले कि वो कचरा मेरे रैक के अंदर जाए और पूरा स्टीयरिंग रैक मुझे रिप्लेस करना पड़े। तो आज मैं वो डस्ट कवर जो है, डस्ट बूट, वो रिप्लेस करूँगा अपनी गाड़ी पे। Alright, let me show you what I'm talking about. तो जो स्टीयरिंग रैक है वो दोनों साइड से कनेक्टेड होता है व्हील के साथ, ठीक है, जिसकी मदद से आपके व्हील टर्न करते हैं, लेफ़्ट या राइट मूव करते हैं। तो ये रैक एंड है और ये स्टीयरिंग रैक के साथ कनेक्टेड है सारा। और देख रहे हो इसके ऊपर ये बूट सा है, रबर का कवर सा, डस्ट बूट जो है ये इस साइड का लेफ़्ट का फट गया है और इसकी वजह से अंदर से थोड़ा सा पावर स्टीयरिंग ऑयल भी लीक हुआ है और कचरा वगैरह अंदर जा रहा है, जिससे इवेंचुअली पूरा रैक ख़राब हो जाएगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं इसको डस्ट कवर जो है इसको रिप्लेस करूँगा आज। Rack is. So this is what we need to. That was good. That was good.
months ago, but I don't have much content on there. Is this like fuzzy already? Yeah, and this is even on its full capacity mode, like it's on action mode, like given this new mode, which is like GoPro stabilization. Oh, yeah. If you're moving the camera a lot, it will give you that automatic stabilization shit. Alright. Hopefully, this should go straight. Same है. So guys, if you enjoyed the video, don't forget to like and subscribe. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई प्रॉब्लम के साथ. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.